स्वागत है आप सभी दर्शकों को ITV के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। मैं रेखा आपकी हमसफ़र एक बार फिर से आधे घंटे तक आपके साथ हाजिर हूँ। तो बच्चों, आशा है इस 2 हफ्तों की छुट्टियों में हमें आपका भी साथ मिलेंगी झरोखा के कार्यक्रम में। तो देखते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या है। सर्वप्रथम एक मुलाकात मिनिस्टर फॉर वुमेन, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिविएशन के डॉक्टर जिको लुवेनी से। इसके बाद एक भेंटवार्ता थम्बूरा भजन के एक मेडलिस्ट प्रनील के साथ। तो देर न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं मिनिस्टर फॉर वुमेन, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिविएशन के डॉक्टर जिको लुवेनी से। डॉक्टर लुवेनी हमें बतलाएंगी कि फ़िजी की इस नए गवर्नमेंट से हमें क्या उपलब्धि और सहारा मिल सकती है। ये उन लोगों की मदद करती है जो अकेली माताएं हैं, डिसेबल व्यक्ति है और कोशिश करते हैं कि गरीबता को मिटाए। इनकी कुछ सेवा है मंथली अलाउंसेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई और ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे वो खुद पैसे कमा सकती है। मिलते हैं डॉक्टर जिको लुवेनी से हमारे साथी बॉबी सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों, साथियों नमस्कार। और जैसे हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं, आज फिर एक बार कह रहे हैं, फिजी में कहीं पर भी हम हो, चाहे कोई गांव है या फिर शहर है या फिर मतलब कोई ऐसे आइलैंड में हम पहुंच जाते हैं और झरोखा के तहत आपके बहुत ही सुंदर सुंदर और एक खुशनुमा टाइप प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही, लेकिन थोड़ी मतलब गंभीर होकर, क्योंकि आज हम जहाँ पर बैठे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड पॉवर्टी मॉनिटरिंग और मिनिस्टर के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर जिको लुवेनी हैं, हम उसको इस्तकबाल करते हैं, नमस्कार करते हैं। डॉक्टर, यू आर द मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड पॉवर्टी monitoring, Dr. Jiko Luveni. Welcome to our program called Jharokha, and there's a lot of viewers who know you very well. You've been a great leader in Fiji for your people of Fiji, and now the portfolio you have taken is even better because you have acted as a Minister of Health and now Poverty Elevation and Monitoring. Welcome to the program once again, and gee, how do you do it? It's such a big portfolio. And you're smiling all the time, and you're still doing it, and you're doing it for the country. How do you carry this weight on your broad shoulders? Well, I have very experienced civil servants, who are committed to the work of the ministry, and they keep the momentum going within the ministry. They're very clear on their vision and the mission, very clear in the plans that they want to do and the overall goal. So it helps when you have staff that are very capable, and I reckon this is why I'm able to do it. The key words you mentioned was plans, your vision, your mission, and your goal. What are your plans, your mission, your vision, and ultimately your goal? Well, for the ultimate goal of this ministry is that we have social welfare. We are providing assistance to deserving cases that will need welfare assistance. We provide them welfare allowances, monthly welfare allowances, and also we provide financial support, to provide them with the children with the education that they need. But there is a certain criteria that they need to fulfill before they qualify for social welfare assistance. And for that also, their applications are thoroughly screened, and our officials will actually do site visits to where they live to witness that these people who are applying are really should be helped by the government. What sort of people do you get applying for those allowances? Well, under the social welfare assistance, it's people who are sick, and those who are disabled, physically disabled in some form or other, single mothers, deserted spouses. How do you help the single mothers? Well, single mothers, our focus are the children. We need to help them in the education of their children. So we provide them with welfare allowances with the children. Not only that,
We also provide training for them so that they're able to have some income generating activities that will win them out of welfare assistance. Right now, we from our social welfare department, in our goal is not to have a social welfare society here in this country. People need to be able to look after themselves for their own livelihood and provide for their own livelihood, and they must have the skills to do so. So those who are under our scheme, we will help them out in income generating skills. Please do tell us, for example, a destitute allowance for a single mother. What sort of financial assistance would you be giving to them? Well, it depends on the children. If they have children who are under 17 years old, they could be receiving a maximum of $120 a month. But we've had some cases that have been weaned out. We've provide them with canteens, some business, micro enterprise businesses, baking of bread, selling of bread, and also sewing. We've given them skills, provide them skills, and sewing machines we provide for them. And just of lately, I did hear about that sewing machine project. What is it all about? Well, sewing machines, they have been donated by the Indian government and the Chinese government. They're really to help the rural women in sewing materials, sewing things for their own families to make a saving in their own household budget, and also help their organizations, the women's organization, in raising some funds for the organization. So skills that will be provided to women, and we are giving these sewing machines to villages out in the. मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो तमें केम पधार्या? बेटी की शादी है, वीडियो शूटिंग करानी है, फोटोग्राफर चाहिए और साउंड सिस्टम की जरूरत है। ओहो, એટલે તમે પેલા દિનેશભાઈ ને કોન્ટેક્ટ કર્યો? દિનેશભાઈ મલ્ટી ડીજે એન્ડ વિડિયો પ્રોડક્શન્સ વાળા. એ ગુજરાતી લગ્નમાં અને ઘણી જગ્યાએ લગ્નમાં વિડિયો ઉતારે છે, ફોટો પણ લે છે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમનો પણ પ્રબંધ કરે છે. तो उनका नंबर क्या है? अरे उभा रहो, હું કહું છું ને તમને. એમનો નંબર છે 2793945. દિનેશભાઈનું નામ જરૂર યાદ રાખો અને હમણાં જ જાઓ. આવજો. हम डॉक्टर जी के साथ है और मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन फीजी। किस प्रकार से जो ये गरीबता है जड़ से उखाड़ कर निकाल कर फेंकना इनकी ये काम है, और फिर आइडेंटिफिकेशन करना इनकी काम है, और देना भी इनकी काम है। बहुत सारे काम ये करती है। डॉक्टर जी इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि आए इतना काम करना कैसे होगा, तो हम ये पूछते हैं। कभी कभार ये भी हो जाता है, घर में कुछ तनाव ज़्यादा हो जाता है, झगड़ा होने लगता है, मतलब बूमा बूम हो जाता है। पतिदेव कुछ घर से देर में आते और मैडम कहती आय हाय क्यों देर हो गया, थोड़ी सी बात से लेकर और उड़ जाते हैं। ऐसे बात पे क्या हो जाता है डॉक्टर जी से पूछते हैं। Okay, with the violence against women, there has been increasing numbers of this, but we have this women's crisis center that provide all the services to them. So we would like to engage the women's crisis center every time there is a need to address women that have been victims of abuse or violence. Do you promote divorce or do you promote reconciliation, whereby after this incident, what is your role, and the Women's Crisis Center, what is their role? Well, we have counselors in all our centers, our counselors that deal with disputes within the family. They are the ones that specifically address the people that do come in for assistance. However, in our outreach program in the community, we address the issue of domestic violence. So in the presence of women and men, we ask them directly, what causes domestic violence? And we ask the men, why is it that you become violent towards your women? So they answer those questions, and some of the men have very interesting answers. So in the presence of men and women, for example, they say, well, when we come back from work, our wives are not even ready to receive us at home. Our dinner is not prepared. She doesn't have that welcoming environment, for a cup of coffee or cup of tea, So when they come in and the wife is probably frustrated about something, her frustration, he's frustrated, and
both of them together. So this causes violence. Is that And then- specific to Indians or Fijians or Anglo-Saxons? Well, the ones that I have spoken with are most, Fijians. So, and I don't know, the Indians, maybe they would have the same thing as well. I'm sure they have. So, but for women, what we tell them is you must read the character of your husband. Aye, that's very You good. must know the personality of your husband, and you must know how to approach him and when to approach him. And if they come to you angry, don't get angry back at them, because you'll not get anywhere. You must have done human psychology. So pacify them, and then once there is peace, provide them with whatever you need, whatever care that your husband expects of you, and then when he's in peace, then you can bring up the. Now I'll come to a very interesting topic, Doctor. Have you ever heard of the organization which exists in Australia, New Zealand, America, Canada, and Fiji called Yadi Vision? And what do you know about them? Of course, I know your division, and I had the pleasant task of attending their annual conference last year, where I met yourself and your friends who were very enthusiastic. And from New Zealand? And from New Zealand and Australia and America, Yes, that they were there, that's right. which was very good. They're very enthusiastic and very passionate about the role that the Arden Vision is doing. And also, in their presence, we had the presence of schools and individuals that have benefited from the assistance that Arden University, Arden Vision is providing for them. And you yourself, you have the personality that would urge people to work and come to you for assistance, which I saw over there. Schools that needed water tanks, you provided, with textbooks, you provided, and people that needed stationaries or even whatever they need for schools, you readily provided. Is it really making a difference to Fiji? Of course it is making a difference. Education is a lot of difference, and education is one of the main pillars of the government roadmap for change that is going now. And you will also find that there's been a lot of developments in the education, in the Ministry of Education. So can we say that Yadi Vision has the blessing of the ministry? Of course, we need you. We need your support. What I like about you, you do not only just provide the textbooks and assistance to schools and then forget about them. You keep going back to them to monitor the progress in their education, which means that you really want to see a child under your assistance complete their primary, secondary, and going into tertiary education so that they can have a better life for themselves. And these are the children who are underprivileged. And, we really need your help in that area. And I like the way that you are approaching. Thank you very much, Okay. Doctor. This has been our 10th year, and we are celebrating 10 years of and the theme says celebration of 10 years of giving. So we love giving. Is there any other project which you foresee or any other place which you want us to penetrate as Yadi Vision Group from New Zealand, Australia, Canada and America, helping Fiji? Is there any particular isolated case or any other place where Yadi Vision can come through the ministry and assist the underprivileged of Fiji? There has been an increasing number of children who have been neglected, very young children. So we don't have enough orphanages. All the orphanages are full. So, if the Arden Vision could help us out with the orphanage. And also there's an increasing number of old people that we have. And you will see in the trend, the population census, the 60 years and over continue to increase. And it has been projected that by 2030, 2050, out of 100 people, there could be 40 people who are 60 years and over. So there's going to be a big need for the old people's homes or nursing homes that we will Doctor, have. we'll take a small break. और डॉक्टर जी यहाँ पर हमें बतला रही है मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, ये बतला रही है कि यादी विजन से बहुत ही नज़दीक के ताल्लुकात उसका है और बहुत ही पसंद करती है यादी विजन क्या करता है। वो अभी से नहीं, बहुत दिनों से वो जानती, क्योंकि यादी विजन की 10 साल गिराइयों कह सकते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ 10 years of giving इन फीजी। लेकिन उसका ये भी कहना है कि आगे चल के ऑर्फनेज सेंटर चाहिए और ओल्ड
पीपल्स होम चाहिए और ट्रेड सेंटर, इस अंतराल के बाद में आके बताएंगे कि याद विजन की मेजर प्रोजेक्ट थ्रू द मिनिस्ट्री क्या है। देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। इस कॉफी के साथ आगे हम बात करेंगे। अब बॉबी के साथ हैं। नमस्कार, आपसे दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाय एवरीबॉडी, और झरोखा में एक बार फिर बॉबी के साथ हैं और हम मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर से हम वार्तालाप कर रहे हैं। हमने कहा था कि जो मेजर प्रोजेक्ट याद विजन का है ऑफनेट सेंटर सुरकम बाबा में है। तुईम्बा बहुत ही खूबी से 28 का लैंड हमें डोनेट कर चुके हैं, याद विजन को दे चुके हैं और अब हम उन पर क्या बनाने वाले हैं। डॉक्टर जी ये कहते हैं कि ऑफनेट सेंटर की ज़रूरी है और ओल्ड पीपल्स होम की ज़रूरी है, ट्रेड स्कूल की ज़रूरी है। तो इनसे कहते हुए ऑल दिस मेजर प्रोजेक्ट याद विजन इज़ अबाउट टू अंडरटेक इन सुरकुम्बा village in Ba, and that's where we'll be aiming in making an orphanage center, an aged care center, and a trade center. How will that directly benefit Fiji and your organization, Fiji and your ministry? Very much so, because there is an increasing number of orphans or children who have been neglected by their parents. So we do need an orphanage. So that will really be so helpful to us. All our orphanages are full, and a new one in the western side would be very helpful. With the aged, if you have an aged people's home, that one we will also be needing some of them as well. So thank you very much that you're proposing to construct this orphanage and the aged home, and also maybe the trade school center, which is very much needed. So I'll ask you a very difficult question. I'll ask you a difficult question, Doctor. We will be able to make it, but the ongoing activities in running the program, would the ministry have any say, or would they be willing to assist us in the day-to-day running of, say, whatever, if elevation, because it is directly under poverty elevation and helping the underprivileged? For example, maybe cooking or this or that, or would the ministry be whatever assistance you will need from the ministry, we will provide. You will be doing us great justice in providing to us the institutions that we really need to have and do not have the funds to construct them. So if you provide those institutions, we will provide all the help that you will need. Thank you so much, in the bottom of my heart. Thank you so much. And now, when you have to identify families who are underprivileged and needy, do you have a situation or process in place whereby they're very easily identified by a ration card, which clearly says this family or these particular families require assistance, and do they have any identification card? How do you identify them without them having a card of some sort? No, they need to, even when they collect their welfare allowances, they need to present vouchers, which we provide to them. And that is very time consuming. But now we're going into e-gov, which means we may be able to be, very soon, we'll be able to provide them with ID cards that they can use. Fantastic. Yeah, and we are now providing food vouchers as well. This is over and above the welfare allowances that we are providing for them, of $30 per person. So even with that one, we will also, with Morris Systems that is helping us in Food for Less, we'll be able to provide them with cards that they can just swipe through to identify them and provide them with those. Thank you very much. और आप डॉक्टर के साथ हैं, हमारे साथ बॉबी है. As a last message to the viewers of Jharokha in New Zealand, what would you like to say? I would like to ask the listeners from Australia, New Zealand, to support Air Division. We need Air Division. We need the help and assistance that they are providing for Fiji, and they're very committed and passionate about, and we'll be out giving them all our attention and assistance that they will need. But just support Air Division, and Fiji will benefit so much from your support. तो साथियों, झरोखा के साथ आप बॉबी है, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के साथ आप हैं, और आप डॉक्टर के साथ, हमारे साथ और आपके साथ मिलकर ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जो गरीबता है, जो ये जिसे कहा जाता है कि इलिटरेसी, उसको हम किस तरह से जड़ से उखाड़ कर बीग सकते हैं। ये हमारा भी कुछ जिम्मेवारी है, ये आपका भी कुछ जिम्मेवारी है। याद विजन साथ साथ मिलकर, मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम ऐसा कुछ कर दिखाए जो मतलब ऊपर जाने के बाद ऊपर वाला कहे आपने कुछ किया, हमने कहा हाँ हमने कुछ किया, थ्रू याद विजन। झरोखे के साथ ये है बॉबी, आप और ऊपर वाला।
सी यू अगेन। 16 तारीख जुलाई को जो तंबूरा भजन मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट कंपटीशन होने वाला है स्किप्टन हॉल मिंगरी में, आज हम बातें करते हैं एक तंबूरा भजन मेडलिस्ट प्रणील नारायण से हमारे संवाददाता अशोक के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं ज्योति रामायण मंडली इधर साउथ ओकलैंड से श्रीमान प्रणील जी। तो प्रणील जी से हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। इनके यहाँ कुछ जो मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट भजन प्रतियोगिता रचित किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम प्रणील जी से और बात करने जा रहे हैं। प्रणील जी नमस्कार और स्वागत है आपका यहाँ झरोखा टीवी में। नमस्कार भाई अशोक जी और सभी दर्शकों को ITV के माध्यम से जय श्री राम स्वीकार हो। हाँ जी प्रणील जी, हमने सुना है कि आप नॉन मेडलिस्ट और मेडलिस्ट का ये जो भजन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बतलाना चाहेंगे? जी हाँ अशोक जी, आप सर्वप्रथम तो ये मेडलिस्ट और नॉन मेडलिस्ट तंबूरा भजन प्रतियोगिता होने जा रही है, जो कि हमारे लोकल कलाकार, जो स्थानीय कलाकार है, जो उभरते हुए कलाकार है, उसको हम प्रोत्साहन करने जा रहे हैं। और श्रोता से यही मांग है कि आकर इस छोटी सी मंडली को अपना सहयोग दे और जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है उनको प्रोत्साहन करे, क्योंकि अंत में यही कलाकार आप सभी के काम आएंगे। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है आप कितने दिनों से आयोजित कर रहे हैं? ये करीबन 1 महीने से हम सभी मंडली के मेंबर इसमें लगे हुए हैं और अब जबकि हमारे पास सभी कुछ तैयार हो गया है, बस 16 तारीख जुलाई को आप सभी से आग्रह है कि आकर हमें सपोर्ट दीजिए और अपने लोकल आर्टिस्ट को गाते हुए सुनिए और जो उभरते हुए कलाकार है उनको सपोर्ट दीजिए। क्या ये पहली मर्तबा आप ये कर रहे हैं? जी नहीं, हमारे सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी मंडली की हमेशा एक उम्मीद रहती है कि हम कुछ जनता के लिए, कुछ अपने श्रोता के लिए करें, ताकि ऊपर वाला भी देखे कि एक मंडली या एक धर्म संस्कार कलयुग में आकर क्या करते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम गरीब दुखियों, बच्चे जो पीड़ा में हैं, जो दुख में हैं, उनको मदद करें। और जब पहली मर्तबा हमने किए थे तो श्रोता हमारे देख चुके हैं कि हमारा एक मकसद होता है कि हम ये भजन, तंबूरा भजन किस लिए करते हैं। जैसे कि पहली मर्तबा जब हम किए तो हमारे 10 बच्चे जो फिजी में याद विजन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको हम साल ही साल सपोर्ट करते हैं। और हमारे मंडली के पास जो कोई भी आता है, जिसकी हाथ सर्जरी होती है या जिसकी किसी प्रकार की संकट, दुख संकट है, किसी की फ्यूनरल, मान लो फिजी से कोई भी आया और यहाँ पर गुजर गया और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं, जो ज्योति रामायण मंडली के पास जो कोई भी धन होता है, हमारा एक फंड है जिसमें हमारे जितने भी शक्ति होती है हम उनके लिए, उनके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो नॉन मेडलिस्ट जो है वो उभरते हुए कलाकार है, जो स्टेज पर जो समाज के आगे कभी नहीं आए, पर हम उनको छुपा रुस्तम कहते हैं, क्योंकि वो गाना जानते हैं, उनके स्वर, ताल, लय, शब्द उच्चारण इतनी सुंदर होती है। तो उनको हम चुन चुन कर लाते हैं ताकि उनका भी, जैसे हम कहते हैं, उनका भी भड़क खुले श्रोता के सामने और तंबूरा भजन को लेकर और आगे चले। अच्छा प्रणील जी, बस इतना बतलाइए, इस कार्यक्रम में कितने कलाकार कुल मिला के रहेंगे? हमारे पास 10 मेडलिस्ट है और 10 नॉन मेडलिस्ट है। और मेडलिस्ट जो है वो उनको कहेंगे हम रियल मेडलिस्ट है। ये पहली मर्तबा है कि इतने सुंदर सुंदर कलाकार हमारे साथ में हैं, जिनको हम खाली एक दफ़ा अप्रोच किए, एक दफ़ा फ़ोन उठाकर रिंग किए कि भाई ज्योति रामायण मंडली ये कार्य करने जा रही है और आपको हमें सहायता की ज़रूरत है। और इसमें जो भी कलाकार को मैंने रिंग किया वो ऐसे नहीं बोला कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। कितने कलाकार तो शुक्रवार जो 16 तारीख जुलाई को काम भी करते हैं, पर ज्योति रामायण मंडली जब कुछ करती है तो अच्छे कार्य के लिए करती है, इसीलिए सभी भजनिक हमारे सहयोग देने के लिए पदार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणील जी। तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने काफ़ी जानकारी हासिल की होगी। स्कूल की छुट्टियों में आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए और खूब मज़ा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह और भी रोचक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।